Hi guys, welcome. This is Sharma, and here we are with another session of economics for class 11, CBSE class 11th, and the name of the session is Production Possibility Curve. Now, you need to know by now, I don't know if you know it or not, but we at Pratham, we do prepare students for economic subjects too. We do prepare students of class 11th and 12th for economic subjects too, right? So we do cater to that as well. And for class 11th, we conduct these sessions on Wednesdays at 9 p.m. Right? So Wednesdays at 9 p.m. Mark your calendars if you're a class 11 CBSE class 11 student. However, if you're not even a CBSE student, it's completely fine because basically the topics they remain the same, as in production possibility curve for a CBSE student, for an ICSE or IGSE or IB board will remain the same, right? So let's quickly start with the production possibility curve. Now this is one very interesting topic. It's not that difficult. It is one very interesting topic of the subject matter, microeconomics, right? So production possibility curve gets covered in subject matter of microeconomics. So in the last session we have covered the central problems of an economy. What all are the central problems of an economy? So there are three central problems. We have the problem of what to produce, how to produce, and for whom to produce. We discussed the distinction between microeconomics and macroeconomics as well. So these were the major things we covered in the last session, right? So moving ahead, we have production possibility curve. Now what this production possibility curve is, basically this curves shows us all the you can say the attainable combinations which we can get, right, with the required resources we have. Okay, so that is basically what production possibility curve in a layman's languages. Okay, so without wasting too much of time, let's quickly get into the knickknacks of it, into the details of the subject, into the details of the topic. And yes, please give this video a big thumbs up, and basically this like or these views, they motivate us to come up every week with new videos. Okay, so let's start with what production possibility curve is. What is the actual definition of it? Now, as you can see with the name itself, production possibility curve. It's a curve. What does that mean? This means that it is a graphical representation. If it is a curve, it means it's a graphical representation. Okay, so we are discussing about the graphical representation of all the combinations. ठीक है, जो भी आपके specific goods है, and basically in production possibility curve we take two goods only. We assume that there are two goods. There is a possibility, or there is a situation where an economy can produce only two goods with the given resources and with the given technology. Okay, so all the points और all the attainable combinations कि हम कितना output पर good X का कर सकते हैं, keeping in mind good Y, ये सारे जो combinations है with any two specific goods, इन सारे combinations का जो graphical representation है, that is what production possibility curve is all about. Now, this production possibility curve, it is also known as the production possibility frontier. That is one name, and it is also known as the transformation curve. Okay. So if somebody asks you what is production possibility frontier, that is PPF, or what is transformation curve, this means the same. Okay, so production possibility frontier, PPF, transformation curve, this remains the same, right? Now here in this particular diagram, in this particular graph, you must be seeing that we have two goods. We have good X on axis, and then we have good Y on Y axis, right? So at a particular point, हम एक particular point पर इतने quantity में हम good X बना सकते हैं, और इतने quantity में we can produce good Y, right? So we have what? When we are utilization of resources to the fullest, है ना? Efficient utilization of resources होता है. So all these are what? All these are the pointers. Here you can see three pointers.
आप point A देख रहे हो, आप point B देख रहे हो, and you can see point C. What does that point A mean? Point A directly lies in the curve. इस पर्टिकुलर कर्व P1 पर आपका पॉइंट A लाई कर रहे हैं. What does that mean? This means that we are using the resources to its fullest. हम पूरे रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, राइट? अब आप देख रहे हो कि here is point B which lies inside of this production possibility curve P1. Now what does that mean? This means कि हमारी resources fully exploit नहीं हो पा रहे हैं, fully utilize नहीं हो पा रहे हैं, and that's the reason why हमारा जो production possibility curve का ये जो dot है, this is an or we can say this is an underutilization of resources. ठीक है, ये क्या है? ये है आपका underutilization of resources. ओके, जहां पर आपका पॉइंट बी है. Whereas जब आपका पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, that means when the production possibility curve it shifts right from P1 to P2. What does that mean? This means कि हमारा जो है resources हमारे पास बहुत ज्यादा आ गए हैं. That's the reason why we're able to achieve more combinations or more sets of goods. Okay, so in depth, what are these resources, the attainable, the unattainable combinations, and all we'll be studying in the further slides. But you need to know that we take care or we take into consideration only two specific goods. Okay, this is an assumption which we made, right? So we have covered two things over here. We have covered that production possibility curve is a graphical representation of all the combinations which can be produced in an economy at a particular point of time, keeping in consideration that we have two goods. And second thing we have is this production possibility curve is also known as production possibility frontier or the transformation curve. Okay, now moving further to the assumptions of the production productivity or production possibility curve. PPC के assumptions क्या हैं? So first assumption तो I have told you कि हम केवल और केवल दो ही goods लेते हैं. We only assume that the economy is in the situation of producing only and only two goods. Okay, that the economy is in the situation of producing only two goods. हमारे पास सिर्फ दो goods produce करने का वो है, right? Second thing is आपका पहला चीज हो गया that only two specific goods can be produced in an economy, right? Second जो आपका assumption है वो ये है that the supply of resources is fixed. Okay, but it can be reallocated. For example, if we are allocating 10 units of resources for good Y at a particular point of time, we have the opportunity of producing also on the other hand, and we are giving 8 units for good Y. ठीक है, हम गुड एक्स के लिए 10 यूनिट्स दे रहे हैं, वाई के लिए 8 यूनिट्स दे रहे हैं. ओके, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज आपका फिक्स रहेगा, आप केवल रीएलोकेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप एक्स को 8 दे सकते हो, वाई को 10 दे सकते हो, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हो, बट इट शुड बी फिक्स. द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज शुड बी फिक्स्ड एंड रीएलोकेट कर सकते हो, बट ओनली विद इन द फीजिबल लिमिट्स. क्या लिमिट्स होंगी? जो भी आपके रिसोर्सेज होंगे इन एन इकोनॉमी. सो दैट इज द सेकंड assumption that we have. The third assumption that we have is that the same combination of resources can be used for producing either one or both of the goods and can be freely shifted between them, right? So this is the third assumption जो है आपका कि आप same combinations बार बार use कर सकते हो. It's not necessary कि आपको हर बार कम unit of एक वो produce करनी है and more unit of good Y produce करनी है. No, you can repeat the same combinations, right? So that is the third assumption which we take. The fourth assumption is कि ये long run में काम नहीं करता है. So it is applicable only for the short term processes. So that is the fourth assumption which we take. And the fifth thing is that technology remains the same. Okay, technological advancement नहीं हो रहा. All the resources and available technology in the environment is optimally allocated and used. Technology remains the same and वो आपकी पूरी तरीके से allocate हो रही है, पूरी तरीके से the technology is being used. So these are few of the assumptions which we take into consideration before studying the production possibility curve, right? Which is also known as what? Which is also known as production possibility frontier. The another name for it is the transformation curve, right? So these are
the other names of the production possibility curve or PPC. Okay. Now, moving further, we have something called production possibility schedule. Schedule or table, right? Now let's say अगर आपको curve बनाना है, curve which is a graphical representation, right? So for making a graphical representation, you definitely need to have a table. अब जब तक आपके पास टेबल नहीं होगा, आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, राइट? सो इन इकोनॉमिक्स वी ऑफन रेफर दिस टेबल एज स्केड्यूल. जैसे हम डिमांड टेबल बोल सकते हैं, बट क्या है आपका इकोनॉमिक टर्म? इट इज डिमांड स्केड्यूल, राइट? So likewise, for production possibility curve, we have a production possibility table or a production possibility schedule. Okay. Now we know the first assumption that we had was कि हमारे resources limited है. Second assumption जो हमने ली थी कि हम दो ही goods produce कर रहे हैं, X and Y. So let's say यहाँ पर हमने दो goods लिए, we have sugar and we have maize. Okay. Now let's see the table once. आपका इकोनॉमी में इतने रिसोर्सेज हैं, ये टेक्नोलॉजी है दैट यू कैन प्रोड्यूस 0 units of sugar, but on the other hand you have the capacity of producing 15 units or 15 tons of maize. Getting my point? That आप शुगर पर अपने रिसोर्सेज एलोकेट मत करो, rather use all the resources, use all the technology in producing maize. Okay, so that is one thing which can be done. सेकेंड जो आपका कॉम्बिनेशन बन सकता है वो ये बन सकता है कि आप 1 ton ऑफ शुगर बनाओ, 1 ton ऑफ शुगर प्रोड्यूस करो, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर प्रोड्यूसिंग 14 tons of maize, राइट? लाइकवाइज अगर आप शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाओगे, सो दिस इज अ प्रोडक्शन कर्व, राइट? सो अगर आप शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाते चले गए, उसके साथ साथ आपको मेज का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा. Again, I'm repeating, if you are increasing the production of X, then you have to reduce the production of Y. Why? Because the resources are scarce. Resources आपके limited हैं, right? And you can produce only 2 goods. Likewise, अगर आपने sugar का और increase करके you did it to 2 tons, आपको मेज को और कम करना पड़ेगा, आपको मेज 12 करना पड़ेगा. अगर आपका शुगर 3 tons है, आपको मेज 9 tons करना पड़ेगा. सो दिस इज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल. ओके. अगर आपका शुगर 4 tons है, आपको मेज करना पड़ेगा 5 tons. और अगर आप 5 tons शुगर जो है आप बना रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप प्रोड्यूस हो रहा है एज अ कंट्री, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा कोई भी यूनिट और कितना भी टन ऑफ मेज वुड नॉट गेट प्रोड्यूस्ड. ओके. क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो हमारा किस में लग जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ शुगर में. सो अगर 5 टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट विल गिव अस 0 tons of maize, right? So these are the combinations. What are these? These are the combinations जो हमने बनाए, keeping in mind the technology we have, keeping in mind the resources we have in our economy. So production possibility curve का point A, अब जब हम इसको plot करेंगे on graph, right? If we plot it on graph, what will we see? We'll see, we have kept sugar on the y-axis and we have kept maize on the we have kept sugar on x-axis and we have kept x-axis. ठीक है? So अगर हमारा 0 tons of sugar है, उस पर्टिकुलर केस में we are producing 15 tons of maize. So हमारा point A ये है. Likewise, we have point B, point C, D, E and F. ये सारे points आपको मिल गए. When you join all these points, you'll find out कि ये सारे के सारे points क्या हैं? आपके production possibility curve पर lie कर रहे हैं. Right? So when all the points are lying on the production possibility curve, what does that mean? That these are the efficient points. Okay, these are the efficient or attainable points. Now what does that mean? Efficient or attainable points, this basically means कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपके जो रिसोर्सेज हैं, राइट, उसके हिसाब से ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस आप लगा सकते हो टू प्रोड्यूस दोज टू गुड्स, राइट? अगर आपका कोई भी पॉइंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से अंदर की तरफ आ रहा होता, दैट मींस व्हाट दिस मींस, दैट आप अपने रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कंप्लीटली यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज, राइट?
अगर आपका कोई पॉइंट इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से बाहर जा रहा होता, व्हाट दैट वुड हैव मेंट, दैट मेंट कि आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं ही नहीं, तो आप कैसे बाहर ले जा रहे हो। और अगर वो पॉइंट बाहर है, दैट मींस आपके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्सेज का ग्रोथ हुआ है, बट यू आर नॉट यूजिंग द इंक्रीज रिसोर्सेज टू द फुलेस्ट, right? So those are the points, right? So that is what the production possibility schedule or curve is all about. Now, moving further, in the last slides, you had seen me discussing about the attainable points, the unattainable points, the efficient or inefficient points. Okay. अटेनेबल पॉइंट्स क्या होते हैं? अटेनेबल पॉइंट्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर लाई कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है, जो भी पॉइंट्स अटेन हो पाएंगे, लेट्स से दिस इज अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट? इसमें आपके जो भी पॉइंट्स या तो इस कर्व पे लाई कर रहे हैं या फिर अंदर इस कर्व के लाई कर रहे हैं। एक चीज है दैट यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज कंप्लीटली, बट barring that, even if you are able to achieve certain combinations, even if you're not using the resources completely, but you're able to achieve certain combinations of goods and services, वो सारे आपके क्या है? वो सारे हैं आपके attainable points. So all those points which either lie on the production possibility curve, or they are inside the production possibility curve or towards its left, those all are the attainable points. When I say unattainable points कैसे हो गए? Again, let's say this is a production possibility curve. ये आपका पीपीसी है, एंड इसमें जो बाहर की तरफ जितने भी पॉइंट्स आएंगे, कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो सारे होंगे आपके अनअटेनेबल पॉइंट्स और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ओके, दैट ऑफ कोर्स आप अटेन नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी लैक ऑफ रिसोर्सेज, right? There will be lack of resources. So these are the unattainable points. Now, what are efficient points? Efficient points आपके हैं जो आपके exactly lie कर रहे हैं on the production possibility curve. Those points which are lying exactly on the production possibility curves are the efficient points. Why? Because resources आपके पूरी तरीके से utilize हुए हैं उस scene में, right? आपका output अच्छा है, resources completely utilize हुए हैं. So these are the efficient points. Okay, and उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर ना होकर कहीं और अगर कोई और भी पॉइंट है, इररिस्पेक्टिव, इनसाइड, आउटसाइड, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जहां पे भी है, वो सारे आपके इनएफिशिएंट पॉइंट्स हो जाएंगे, राइट? सो वी हैव अटेनेबल पॉइंट्स, अनअटेनेबल पॉइंट्स, efficient points and inefficient points. At times attainable और efficient आपका vice versa use होता है, and unattainable, inefficient vice versa use होता है. So don't get confused. I've kept all the terms and terminologies used in this particular slide. Okay, now moving further, we have some properties of PPC. So if you have noticed, ये भी एक question आपका काफी ज्यादा आता है, properties of PPC. ये जो आपके PPC के properties हैं, आपने अगर देखा होगा, मैं इतनी देर से आपको पीपीसी समझा रही हूँ, हियर आई हैव मेड 4 कर्व्स, उससे पहले भी आई हैव शोन यू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम, राइट? आपने एक चीज नोटिस करी होगी, दैट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, राइट? ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आप देखो, कोई सा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होगा, इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. What does that mean? This means that अगर आप एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो, राइट, इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, फॉर एग्जांपल अगर आपको y का प्रोडक्शन बढ़ाना है विद रिस्पेक्ट टू x, देन यू have to take away the resources from x so that we can use them to for y, for the production of good y. Okay, so these are the production possibility curve which is always sloping downwards, right? Why does it slope downwards? It slopes downwards from left to right because more of good x can be produced only and only we take resources from good y. So that is the reason why production possibility curve slopes downwards. Now अगर आपने दूसरा वो प्रॉपर्टी है, दूसरी चीज आपने नोटिस करी होगी कि पीपीसी हमेशा ऐसा रहता है, it is always concave to the origin. Okay, अगर आपका ऐसा है, that means it is always concave to the origin. Here is the origin O, right? What does that mean?
This means that PPC follows the increasing MRT. Now, what is MRT? MRT is marginal rate of transformation. What is MRT? MRT is marginal rate, right? So आपका पीपीसी हमेशा कॉन्केव शेप का क्यों होता है? बिकॉज अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर गुड, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी, इधर एक्स और वाई, कंप्लीटली ऑन योर चॉइस, अगर आपको उसका प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके ज्यादा यूनिट्स जो हैं आपको बनाने हैं, देन फॉर दैट यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर गुड वाई, राइट? सो ये आपका साथ में चलता है दैट मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड are sacrificed to gain one additional unit of another commodity. अगर आपको Y का ज्यादा यूनिट लेना है, for that आपको X के यूनिट्स कम करने ही पड़ेंगे, right? So these are the two properties of IPC. दोनों ही properties एक दूसरे से interrelated, दोनों ही properties more or less एक जैसी हैं. The first property is that PPC slopes downwards from left to right, and the second property is PPC is always a concave shape curve. Okay. Now moving further, we have the changes in PPC. आपका जो production possibility curve है, it does change, right? With respect to the resources, it changes with respect to the technology used, right? So आपका जो PPC है, basically ये दो तरीके से change होता है, right? This PPC gets changed in two ways. First change is the shift. आपका पीपीसी कंप्लीटली ही शिफ्ट हो गया, एंड दूसरा है आपके पीपीसी का रोटेशन, राइट? व्हाट आर दीस टू थिंग्स? आई विल टेल यू इन अ व्हाइल. शिफ्ट्स इन पीपीसी क्या होता है? या तो आपका पीपीसी शिफ्ट होगा टू लेफ्ट और टू राइट. फॉर एग्जांपल, if this is the production possibility curve, which is P1, P1, right? If I'm talking about the shift of this production possibility curve, शिफ्ट कहाँ होगा? शिफ्ट अगर आपका राइट में होता है तो पूरा कर्व आपका शिफ्ट होगा टू P2, एंड लाइकवाइज अगर लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो पूरा कर्व आपका शिफ्ट हो रहा है टू P3, राइट? सो जब आपके पूरा का पूरा रिसोर्स चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स और बोथ द कमोडिटी. अब आप खुद देखो, यहाँ पर कमोडिटी Y है, यहाँ पर कमोडिटी X है. दोनों के ही रिस्पेक्ट में अगर आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, अगर आपके रिसोर्सेस चेंज हो रहे हैं, सिंपल सी चीज है, आपका शिफ्ट होगा टू लेफ्ट या राइट when the changes in technology or the change in resources are happening with respect to both the goods X and Y, राइट? अब आप सिंपल सी चीज है, अगर आपका सिर्फ एक गुड के लिए हुआ, लेट्स से अगर आपका केवल हुआ गुड Y के रिस्पेक्ट में, तो आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऐसा बनेगा, X का पॉइंटर तो सेम रहेगा, राइट? Y का ऊपर नीचे जाएगा, बट ये आपका शिफ्ट नहीं हुआ, दिस इज द रोटेशन. ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रोटेट हो गया, दिस इज द अदर केस, राइट? शिफ्ट क्या होता है? शिफ्ट इज व्हेन द एंटायर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये कब होगा? विद रिस्पेक्ट टू both the goods X and Y. जब आपकी इधर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, बेटर होगी, तो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना होने की वजह से आपका टेक्नोलॉजी यूज नहीं होगी इतनी, तो वो आपका लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा, राइट? अगर रिसोर्सेज का ग्रोथ होगा तो पीपी विद रिस्पेक्ट टू बोथ द योर कमोडिटीज, देन पीपीसी वुड शिफ्ट टू राइट. अगर रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, पीपीसी विल शिफ्ट टू लेफ्ट. इट इज एज सिंपल एज दैट. On the other hand, अगर आपका only with respect to one good or one commodity है, right? If there is a change in resource or technology with respect to only one good or with respect to only one commodity, in that particular scenario, we would call it a rotation of PPC. We would not call it a shift in PPC, as I have explained in this particular uh, diagram, in this particular example. Again, I'm telling you what is rotation of PPC. Rotation of PPC is when the PPC or the resources or the technology is changing only with respect to one commodity and not both. For example, अगर X के resources बढ़ जाते हैं, right? Initial मान लो PPC ये रहा था P1, राइट? आपका X एक्सिस पे X गुड है, Y एक्सिस पे Y गुड है. X के लिए रिसोर्सेज आपके बढ़ जाते हैं. फॉर
only one good and y के लिए it remains the same. तो क्या होगा? What will be the scenario? Scenario would be कि y का point same रहेगा, लेकिन x के लिए since resources बढ़ गए तो it will shift, right? So that is very easy. It will rotate. It will not basically shift. Only the point will shift. अगर आप majorly देखो, it will rotate. Right? So आपका क्या है? With respect to only one good, if it is happening with respect to only one good, in that case, we say that there is a rotation of PPC. But if it is happening with respect to both the goods, in that case, we say it is a shift in PPC. Okay? So that is what the rotation and shift is all about. Yes, guys, in this, there is one thing that the rotation can be inwards or outwards. Right? Rotation can be both inwards or outwards. Likewise, the shift आपका जैसे left और right में होता है. Right, shift आपका जैसे left और right में होगा depending upon the situation, depending upon the technology and everything, resources. उसी तरीके से आपका जो rotation होगा inwards outwards both हो सकता है. As in ये अभी बाहर की तरफ rotate हुआ है, लेकिन अगर x के लिए resources या technology कम हो जाती है, तो ये आपका अंदर की तरफ भी rotate कर सकता है. Right? Now the next slide will show you the difference between the rotation and the shifts of PPC quite clearly. So there's nothing much to explain over here. I'll quickly take you through these slides. This is the last slide for the day, and then we'll wind it up. What is rotation of PPC? Rotation of PPC is again जब आपका technological advancement होता है, technological improvement होता है with respect to one commodity. तो rotation कब होता है? Rotation happens with one commodity only, either X or either Y. In that particular scenario, the rotation happens. आप इस particular graph में देखो कि X के लिए technological improvement हुआ, तो X था पहले Q होता था, लेकिन technological advancement हुआ तो ज़्यादा आपके क्या कहते हैं quantities बनना लगा, तो इसलिए there's an outward rotation. Okay, so आप देखो ऐसा हुआ. Likewise for Y. So with respect to one commodity, it will be a rotation. But when I say shift will be with respect to both goods or commodities. Shift will happen with respect to both the goods and commodities. It can be an inward shift, sorry, it can be a leftward shift or a rightward shift. Rightward shift कब होगा? Rightward shift होगा जब आपका advancement in technology होगा, right? तब आपका rightward shift होगा, या फिर और growth of resources, right? तब आपका rightward shift होगा. Whereas leftward shift कब होगा? जब आपकी टेक्नोलॉजी गिरेगी, राइट, आपके रिसोर्सेज जो होंगे वो नहीं रहेंगे, रिसोर्सेज आपके कम हो जाएंगे, तब आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा. Right? So with this, we have covered all the possible things which we can for the production possibility frontier, the production possibility curve, or the transformation curve. Thank you so much, guys, for staying tuned. I hope you all enjoyed the session, and if you do, please do hit that like button. Subscribe to Pratham Test Prep's YouTube channel so that you get notified whenever we upload a new video or whenever we go live. And trust me, we do a lot of informative videos for you. And yeah, we'll meet you super soon next week with a brand new topic. Till then, stay safe, guys, because there's a hike in the cases. And yeah, take care of yourself and your near and dear ones. Bye bye. Take care.